center of gravity. Does this point lie into the matter or it can lie outside the matter? Students? So its center of mass or center of gravity, does it lie into or outside the matter? That's my question to you. Sir, inside the body. Inside the body. Now suppose, Neha, if in case if I give you a thin uniform ring, sorry, thin uniform wire, okay? If I give you a thin uniform wire, can it be very exactly the center of mass of this particular wire is? Neha, where is the center of mass for this particular thin uniform wire of length L? Sir, in the middle of the wire. Okay, that is the midpoint of the wire, that is at a distance L/2 from one end. Agreed? Yes, sir. Now, अगर इसी वायर को मैंने रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो where is the center of mass? Same wire. Length of the wire is equal to circumference of the circle. Where exactly? Yes, you raise your hand. Where exactly center of mass? Sir, perpendicular from the center. Perpendicular from the center. I didn't get you. You raised your hand, isn't it? Come on, answer. No, sir. Oh, Sir, I don't know. okay, Nia, continue. अगर मैं रिंग देता हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? Yes, anybody else? Where this is any point? Students, don't you think so that this particular ring, listen carefully, students, don't you think so this particular ring is made up of, okay, it's a ring, it's a metallic ring, it's a uniform. Uniform means what? Mass is uniformly distributed along the length of the ring, that is circumference. Absolutely Valentino, very good. तो अनम्यूट करके क्यों नहीं बोल सकते? सबको पता चलेगा ना कि तुम्हें आता आंसर. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब तुम रिंग को देखते हो स्टूडेंट्स, तो डोंट यू थिंक सो व्हाट अबाउट द मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग? Students, can you tell me how is the mass aligned in this particular ring? Is the mass in this particular ring is aligned in discrete manner or in continuous manner? That's my question. Continuous manner. Continuous. तो कहना इसे अगर तुम कोई भी पार्टिकल लेते हो, यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे लेते हो, तो सारे ये जितने भी पार्टिकल्स है, कहना इसे all these are equidistant from the given point. आया ना? Yes, sir. तो क्या मैं इसको locus of points बोल सकता हूँ? Locus of points or locus of distribution of mass from a given point. Agreed? Locus. Students, have you done maths? Yes, sir. Can you tell me what exactly locus means? Locus of points? Collection of points. Collection of points. Which are equidistant. Now suppose if I say if they're equidistant from a given point. So ये जितने भी points है, these are all equidistant from a given point. And that point becomes the center of mass. So what is the center of mass for this particular thin uniform ring? Geometrical center. That means point of intersection of the diameters. And for a circle, it has infinite diameters. If I happen to go for it, if I take this as a sphere, not a circle, if I take this as a sphere, infinite. Where exactly the entire mass is supposed to be concentrated at the geometrical center. यानी देखो ध्यान से देखो, जब भी मैंने वायर लिया था तो सेंटर ऑफ मास मैटर के अंदर था. जैसे मैंने इसको रिंग बना दिया तो मैटर से बाहर गया. ना सपोज अगर इसी को ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन ना.
Now, if I take this as my semicircular wire, okay. Now, if I take this as a semicircular wire, everybody listen carefully. So, can you tell me where exactly the center of mass for this particular wire will be? Anya is answering middle of the wire. Middle of the wire maybe. My question is, suppose it was initially an entire ring, na? Now, if I give you a semicircular ring, hollow, a semicircular ring which is hollow, are you getting it? I want to know where exactly the center of mass of this particular ring. This is the center of the ring. This is center of the ring. Agreed? So, इसका center of mass कहाँ पे होगा? Now, students, the mass is not distributed throughout the length of the circle, not throughout the circumference. Now, the mass is distributed only along pi r. Agreed? And there is continuous distribution of mass. Students, continuous distribution of mass है. तो मुझे बताओ यहाँ पे center of mass कहाँ पे लोकेट होगा? Anyone? Sir, the radius, the center of the radius. Center. Okay. Okay. Students, center of mass always shifts towards the heavier side. Wherever the mass is heavy, center of mass will shift to that particular part. If you see over here, students, I've given you a semicircular ring, only a semicircular ring. The mass is distributed more along the boundary. Now, students, अगर मैं यहाँ पे दो axis draw करता हूँ, students, that is symmetrical axis. If I consider this is one which is joining the diameter, and to this I'm drawing a perpendicular axis, and this is the axis of symmetry. So this is called as the axis of symmetry, which divides this particular into two halves. It has only one axis of symmetry, students. This geometrical shape has only one axis of symmetry, but divides the ring into two equal halves. Students, तुम्हारा center of mass will lie on the geometrical axis, but where? कहाँ की तरफ? Sir, यहाँ पे mass ज़्यादा heavily distributed है. तो ध्यान से सुनना, students. ये पूरा तुम्हारा radius of the ring होगा, है ना? ये अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? r/2 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेंटर ऑफ मास r/2 होगा, r/2 से कम होगा, r/2 से ज्यादा होगा? तो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हेवियर साइड, जहां पे हेवीनेस ज्यादा होगा. सिंस द हेवीनेस इज towards the edge, towards the boundary, towards the length of the ring, in that case, my COM will be certainly greater than half the radius. Are you getting it? That Yes, means sir. वो सीधा wire था, when it was a straight wire of length L, center of mass was a geometrical center L/2. When it was in form of a ring, all the constituent particles were equidistant from a given point, so I'll assume the center of mass to be at that particular point. If I try to go for a semicircular ring, in that case, where exactly my center of mass has shifted? So I shifted towards the heavier side. And now this becomes my center of mass, greater than r/2. Is this clear to all of you? Yes, sir. Mass तो equally distributed है ना, heavier side कैसा? See now, the mass is distributed throughout. So अगर मैं I'm speaking about the symmetry, यानी ये पूरा heaviness will be over here. And can I say this is your axis of symmetry, which divides the halves into two parts? Okay. Are you getting it?
So students, center of mass and center of gravity are simply, we can consider them to be as imaginary points. Students, ये हमारे हिसाब से हम imagine करते हैं. Are you getting it? लेकिन one thing you keep in mind, if I give you a geometrical shape object, okay, or a symmetrical object, students, then the center of mass will be certainly lying along the symmetry of that particular object. उस object का जो symmetry होगा, वहां पे ही center of mass होगा. And the center of mass shifts according to the heaviness we consider. जहाँ पे heavier side दिखेगा, center of mass will shift accordingly. Center of gravity is a point where the entire weight of the body is supposed to be concentrated, and I made it very clear, such that the algebraic sum of all the forces acting on the body at that point is equal to 0, or algebraic sum of total moment of force about that point is 0. Is that clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 points to keep in mind. Center of mass of a rigid body. Students, center of mass of a rigid body. What does it depends on to? Since center of mass of a rigid body simply depends on the shape of the body. And ये factors ध्यान में रखना, it depends on the shape of body. At the same time, it depends on to what? Distribution of mass of the given body. समझ में आ रहा है? Distribution of mass of given body. Jahan pe distribution of mass is more, your COM will be shifting over there. So hope students you are writing it simultaneously. I made it very clear. I gave you COM and PG का definitions मैंने दे दिया है. फिर उसी के नीचे जब भी तुम्हें लिखना होता, तुम लिख सकते थे कि for a thin uniform ring of length L, center of mass is midway L/2. For a thin uniform, wire of length L, thin uniform ring, mass is uniformly distributed. Therefore, there is continuous distribution of mass. Center of mass is at the geometrical center because all the masses are equidistant, locus of point from a given point. Center of mass of a semicircular ring. Since the semicircular ring is a symmetrical object, consider the center of mass will lie on the axis of symmetry, but at a height greater than r/2. Center of mass of a rigid body depends on to what? It depends on the shape of the body and distribution of mass of the given body. For symmetrical objects, center of mass will always lie along the axis of symmetry. Can I erase it now? Yes, sir. Sir, just a second. Since जब भी तुम lectures attend करते हो ना, तो सुनो ध्यान से. दूसरी बात है, जब भी तुम lectures को attend करते हो, तो don't just sit idle, students. Don't just go on listening to the teacher. There is a way of getting it. There are few students, I must have seen them. They are just putting their head, sitting, keeping their legs on the table. If they have a proper desktop and everything, the parents have arranged for it. Some of them will sit under the bed, cushion laga ke, cozy ban ke. Students, these are all cases of to be drowsy. When you know that your morning lectures are in the 7:30 around, in that case, you have to wind up your earlier night by 10 o'clock. You need to have minimum, you need to have 7 hours of sleep. A proper 7 hours of sleep is a must. And if you don't sleep on time, you don't get up on time. If you don't get off time, that is what it's incomplete. And then you first doze off in half an hour, 45 minutes. And in that important part of the topic goes missed out in that case. And you should instantly jot down things importantly, what exactly is being said by the teacher. That depends on to you, what you want to pick up from the board, and for that, you don't have to go on repeating the lectures. You can't just go on looking at the recorded lectures. Recorded lectures is only for those students who are missing out. My dear, study, a few of your dads used to study at midnights. He is saying 1 बजे तक पढ़ो, आराम से उठो, फिर 4-5 बजे तक, और अगर कुछ नींद का प्रॉब्लम हुआ तो दोपहर को 2 घंटा सो लो, enough. And then he used to say, हमारे टाइम में we used to do this and that, etc. etc. Okay, fine.
That's fine. Parents have their own way of approach. But see one thing, when you don't have any lectures the next day, then it is. Okay, that's one thing. But when you have lectures, you need to have a proper sleep the earlier day so that you are fresh in the morning in order to absorb something. See one thing, this is very true. A sound sleep is always for 3 hours. Students, 3 hours is a sound sleep. If somebody wakes you up after 3 hours, you're fine with it. So generally, you need to go for that many hours in that case. And if you don't have any lectures the next day, then yes. And one thing, what if your parents sit for the night studies or whatever it is? Yes, you can go for it. But students, for that you have to develop it. तुम्हें develop करना होगा. It's not all of a sudden. You try, and somewhere or the other, students, you need to develop this habit. एक habit होना जरूरी है. But the number of hours what you need to get sleep should be minimum. मेरे हिसाब से तो 8 घंटे तो sleep चाहिए. 7 to 8 hours of sleep is the must. दोपहर को मत सो, doesn't matter. You need that many proper hours. लेकिन ये डेवलप करो. एक हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड. या तो किसी को लेट नाइट बैठ के पढ़ने की आदत होती है सुबह जल्दी. अगर तुम्हारे 7:30 के लेक्चर है तो तुम 5 बजे उठो और फिर तुम अपना रूटीन में शुरू कर दो. 5 बजे उठना है तो तुम्हें किसी भी हाल में बाय 10 o'clock यू हैव टू मेक अ हैबिट. या तुम्हें लेट नाइट अगर करना है 1-1:30 तक, उसके बाद में सो. देन यू गेट अप बाय 6:30. That the number of hours you have to make it very clear. You can't just miss out those and make a habit of taking short naps. एक habit और ये important है. What your parents also saying, it's not that experience is making them to speak. That depends on what kind of studies is been done. लेकिन स्टूडेंट्स एक हैबिट डेवलप करने की जरूरत है. या तो सुबह जल्दी उठो या तो लेट. बिकॉज द नंबर ऑफ आवर्स व्हिच यू नीड टू डू स्टडीज पर डे, it should now gradually go on increasing. If you're doing 4 hours, it has to be 6 hours. If it is 6 hours, it has to be 8 hours. The maximum number of hours when you do it should be around 12 hours, students. Proper 6 hours your studies and 6 hours of lectures. That is how your mode of working should be there. Okay, students. Now let us go for how to locate the position of center of mass. Okay, students. Now we go for location of C1. Students, how to locate the center of mass. Now suppose if I happen to go for first case for a system, okay, of 2 particles. Since if I give you a system of 2 particles, how do you locate the center of mass? Students, in the sense it is that suppose if I give you 2 masses, students, there is mass m1 given to you and the mass is m2 given to you, students. Both these masses are placed at a certain finite distance from each other. Let us say that the distance between them be small d. I want to locate the center of mass. Students, ये ध्यान में रखना, the distance of center of mass, this is very important. Students, the distance of center of mass is, okay, the distance of center of mass we consider is always inversely proportional to, is always inversely proportional to the mass of the particle. यानी स्टूडेंट्स अगर ये मास ऑफ द पार्टिकल है, डिस्टेंस ऑफ सपोज मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास समवेयर ओवर हियर है. अभी देखो m1 और m2 दिया है. सोचो कि m2 हैवी है तो मैंने क्या बोला, हैवीनेस होगा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है. तो अज्यूम, ये अजम्पशन है स्टूडेंट्स. लेट मी टेक दैट दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो कैन आई से ये जो सेंटर ऑफ मास है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम m1? सर इट्स डिस्टेंस r1. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2? लेट अस टेक दिस इज r2. Yes. So the distance of center of mass, students, distance of COM
Are you getting it? Of any particle. Since it's inversely proportional to. It is what? Inversely proportional to mass of the particle. Distance of center of mass of any particle is inversely proportional to mass of that particle. उस particle को लेना है. बस ये एक relation ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. तो ये तुम्हारा mathematical relation हो गया. Are you getting it? यानी अगर मैं suppose दूं कि r is a distance, then r is inversely proportional to m. That is what it means. अगर मैंने यहाँ पे r ले लिया है तो ये हो जाएगा m. तो r is inversely proportional to m हो जाएगा. Now if I want to show it over here, how do I write down? So r1 is inversely proportional to m1. R2 will be inversely proportional to M2, तो M2 पर चला जाएगा. क्या ये clear हुआ स्टूडेंट्स? है ना? Yes, sir. M1 R1 is equal to M2 R2. Agreed? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Students, have you come across with such kind of relations anywhere else? कहाँ पे भी ये पढ़ा है ऐसा कुछ relation? हाँ सर, gaseous states में कहाँ पे? similar पढ़ा है, मतलब sort कहाँ of. पे पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा है? सर थर्ड लॉ ना? Third law कहाँ से? Third law, Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. मैंने M1 R1 लिखा है is equal to M2 R2 लिखा. नहीं पता सर. नहीं पढ़ा? सर क्लिक नहीं हो रहा. Okay, अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. Everyone listening carefully, students. Suppose अगर मैंने तुम्हें एक रॉड दिया, यूनिफॉर्म रॉड, और ये मासलेस रॉड है. ओके, यहाँ पे मैंने 1 किलोग्राम दिया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने 2 किलोग्राम रखा. मुझे इस सिस्टम को बैलेंस करना है. ओके, एंड आई वांट टू बैलेंस ऑन अ नाइफ एज. फॉर एग्जांपल ये उंगली के ऊपर बैलेंस करना है. स्टूडेंट्स, वेयर डू यू थिंक सो दैट माय फिंगर शुड रेस्ट? Should my finger should be midway? Should my finger should be closer to 1? Or should my finger should be closer to 2? If I want Closer to to 2. Closer to 2. 2. heavier mass आ गया. अगर suppose मैं mass लेता ही नहीं था और सीधा एक rod लेता, for example ये मेरा पेन है, अगर इसको मुझे balance करना है, the mass is uniformly distributed. Students, I can keep it exactly at midway. I'm keeping it exactly Yes, at sir. midway. I'm getting it. I'm balancing it exactly at the midway. Okay, यानी अगर तुम्हारे पास में scale होगी ना 15 सेंटीमीटर की scale, if you have a compass box in front of you, so where exactly the center of mass of that scale? It's at the geometrical center. We consider 7.5 centimeter. लेकिन अगर एक साइड heaviness आ गया तो what happens? तो यहाँ पे तुम्हारा center of mass यानी हुआ क्या है? यहाँ पे अगर suppose मैं एक knife edge रख दूं, तो ये क्या हुआ मेरा? इसको हम क्या बोलेंगे? सर ये हुआ मेरा turning point. Friends, ये है मेरा fulcrum. ये क्या है? fulcrum. यानी हो क्या रहा है यहाँ पे? सर ये फल्क्रम की वजह से अगर ये बॉडी के वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स जा रहा है, यानी इसका खुद का मास जा रहा है, उसका ग्रेविटी है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ओवर हियर. हाउ इज दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम हियर. देखो ना, ये डिस्टेंस मैंने r1 ले लिया फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट. ये क्या है सर? इसका मास ज्यादा है, तो ये m2 into g. इसको मैंने लंबा एरो बना दिया बिकॉज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे है? r2 है ना? तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है सर? वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टॉर्क. याद आ रहा है कुछ? वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क. ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन में? सर ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये कौन सा है? clockwise moments. So can I say algebraic sum of net torque acting on the system is 0? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हमेशा हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज
torque in clockwise, summation will be 0. Students, तुमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ students, moment of force, turning effect, chapter, force, class 10th में भी पढ़ा है in physics. At the same time, you all have learnt about the formula for torque in circular motion, correct way to represent torque, R cross F. If you recollect, I had given you a particle performing circular motion in anticlockwise direction. In anticlockwise direction, torque was along positive Z. Tangential force was acting along the tangent of the particle performing circular motion. Position vector was along the radius. So I wanted to know what exactly K cap. कुछ याद आ रहा है students? So K is equal to I cross J. Students, कुछ याद आ रहा है या नहीं? हाँ students. A simple example, beam balance. तुमने फोर्स भी पढ़ा होगा, लेंथ का फोर्स भी पढ़ा है, तो तुम लोगों ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. तो व्हाट एग्जैक्टली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा होगा? जब भी algebraic sum of net force acting on the body is equal to 0. When algebraic sum of net force acting on the body is equal to 0, then in that case what exactly? The body is in static equilibrium or dynamic equilibrium. Yes, sir. Algebraic sum of net torque, rotational equilibrium के लिए. अरे ये भाजी वाले को नहीं देखा है क्या? भाजी ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? भाजी वाले का फॉर्मूला है. भाजी यो मामा शी गोes for भाजी वाला, तो शी वो लेके खड़ा है, वो वाला फॉर्मूला ये है. क्या देख रहे हो? What are you looking at me? भाजी वाला knows how to go about with center of mass, and you all are still thinking how to go about with it. This is not proper. And that's why भाजी वाला are very smart. You know that? जाओ कभी भाजी लेने. फ्रेंड्स कभी जाओ भाजी लेने के लिए. भाजी वाले जो तुम्हें दिखते हैं ना, जो भैया दिखते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं. सामने वाले की शक्ल पहचान के उनको पता चल जाता है कि इसको मैथ्स नहीं आता है. सच्ची में बोल रहा हूँ. क्या ट्राई करना कभी कभार. तुम्हारी शक्ल देख के वो तुरंत उनको पहचान में आ जाता है कि इसको मैथ्स नहीं आता है, इसलिए वो जानबूझ के रेट्स भी बचाएंगे ना, वो डेसिमल्स में बताएंगे. पाव किलो का 2.5 रुपया, 2.5 रुपया पाव किलो, 25 रुपया पाव किलो, 23 रुपया पाव किलो. They'll say like that so that you becomes very confusing calculation. और फिर जो पैसा वो मांगेगा, you have to give it to them and you go away. This is how they do it. So this is simple equilibrium balance है, beam balance है. इसको मुझे बैलेंस करना है, खत्म हो गई बात. Yes, sir. ये फॉर्मूला को अगर मैं लूँ तो मेरा क्या आंसर आ रहा है? सर m1g into r1, m2g into r2. gg will get cancel. आ गया. Yes, sir. यानी तुम जब भी फॉर्मूला, यानी स्टूडेंट्स ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, क्योंकि मैंने वेट डाल दिया ना स्टूडेंट्स, मैंने वेट डाल दिया तो मेरा ये पॉइंट क्या बन गया? मतलब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया. लेकिन वही यहाँ पे पॉइंट क्या बन गया? COM बन गया, क्योंकि मैंने जी को निकाल दिया. लेकिन कंसेप्ट तो वही आ रहा है. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Only 1 or 2 students. What about the rest of them? Anaita, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Izar, rest of the guys, Neha, Yes, sir. Arif, Yes, sir. Nikhil, Oj, Pranay, Rishabh, Rishika, Shubh. Are you getting Shubh? Yes, sir. Yes. Okay. तो हम स्वयं आ गया. Taksh Gandhi, Taksh, are you Yes, getting sir. it? Taksh getting it? Okay. वृद्धि क्या बोल रही है? वृद्धि she's typing a lot today. क्या हो गया वृद्धि को? So torque is differentiation of acceleration. No idea. How can differentiation of acceleration will give me torque?
Differentiation of acceleration with respect to what? Now, Vruti, torque is simply one force into perpendicular distance. And if I go for Vruti, if you say differentiation of torque with respect to time, you said it, no? Sorry, differentiation of acceleration with respect to time. This is what you mean to say, Vruti? dA by dt. तो स्टूडेंट्स वृद्धि जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो ना तो एक थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा ध्यान दो। तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज की मिलेगी कि नहीं मिलेगी कैसे पता चलेगा? तुम डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका यूनिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इज इन सेकंड, तो सेकंड क्यूब। वृद्धि मुझे बताओ, डू यू हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मीटर पर सेकंड क्यूब? हाँ, मीटर per second square. No, so differentiation of acceleration with respect to time is not possible at all. You can't differentiate acceleration. But the differentiation of acceleration with respect to time is not possible. Huh? I didn't get you. What is it? I heard about it. Even I had the same doubt. From where did you hear about it? Whom did you hear it, Vruti? ये किसे तुमने कहा? हाँ? Vruti, from whom did you hear this? Huh? Vruti, from whom did you hear it? Differentiation of acceleration with respect to time? Read it. कहाँ पे read किया? Acceleration can change with respect to time. Getting it? I can go for area under the graph of that, which will give me velocity. Acceleration changes with respect to time. Dependence on time हो सकता है, लेकिन उसका slope नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमने slope लिया ना, differentiation लिया है। अगर तुम product लेते, रुति, अगर तुम product लेते acceleration into time, तो meter per second square into second, तो हो जाता meter per second, and that is velocity. So area is possible, slope is not possible. And students, I made it very clear, differentiation is more precisely going with respect to slope, and integration goes with respect to area. तो तुम integration में जा सकते हो यहाँ पे, differentiation में नहीं जा सकते. Agreed? चलिए students, तो ये तुम्हारा formula यहाँ से आता है. अगर किसी ने पूछे ये formula कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है. Agreed? तो देखो, what exactly is said? For a system of two particles, students, distance of center of mass of a particle is inversely proportional to the mass of the particle. R is inversely. ये तुम्हें relation मिला, m1 r1 is equal to m2 r2. Now if you try to rearrange these terms, are you getting it? So can I use your component and dividend also over here? Why not? अगर यही equation को मैं rearrange करता हूँ students, तो can I say m2 plus m1 upon m1 is equal to r1 plus r2 upon r2. What is m2 plus m1 is the total mass of the body we consider, which I'll keep it as it is. Agreed? Upon m1. Since can you tell me what is r1 plus r2? Sir, r1 plus r2 is d upon r2. है ना? Now if I ask you, can you tell me where is the center of mass? Center of mass from, the answer सुना? Center of mass from object m2. तो क्या करोगे तुम? r2 को सब्जेक्ट बनाओगे, तो r2 क्या हो जाएगा? What is r2? d upon m1. I get it. Sorry, d into m1 upon m1%. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी अगर तुम्हें डिस्टेंस चाहिए सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, क्योंकि तुम्हें ये तो डिस्टेंस नहीं देंगे स्टूडेंट्स.
R1 R2 दे ही नहीं सकते, वो दो मासेस देंगे, कभी भी प्रॉब्लम होगा तो दो मास देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस देंगे। अभी तुम्हें सेंटर ऑफ मास पूछा है ना, तो तुम क्या करोगे, R2 इज इक्वल टू टी m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर तुम्हें R1 पूछा है और R1, तो क्या करोगे, R1 पूछा है तो यहाँ पे क्या करोगे, इट विल बी d into m2, तो होल अपॉन m1 plus m2। Friends, are these formulas clear to all of you all? Yes, sir. Agreed. Now do keep this in mind. अगर तुम ये रिलेशन लेते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये रिलेशन को ध्यान में रखो, और based on this relation students, what exactly the conclusion you can draw over here? Students, यहाँ पे तुम conclusion ले सकते हो that what happens if R1 is equal to R2, तो क्या होगा, if R1 is greater than R2, तो क्या होगा, and if R1 is less than R2। Since अगर R1 is equal to R2, तो where exactly the center of mass is? So the center of mass is Center. at Center. D by 2, Center. है ना, D by 2। Therefore, can I say, therefore the two masses has to be equal? आया ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो तुम्हें कंडीशन मिल रहा है। अगर मैंने बोला R1 is greater than R2, so R1 यानी R1 is greater than R2, तो ये पॉइंट थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्ट होगा, और ग्रेटर है ना। Yes, sir. Sir, R1 is उल्टा greater होगा ना, ना? तो सर R1 के उधर है। अरे R1 is greater than R2 का मतलब क्या हुआ, center of mass is away from M1 closer to M2। M2 is heavier. हाँ. देखो ना, okay. Yes, sir. क्या करो, सामने दिख रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है ना मैथ्स में, हाँ, Yes, sir. कंपोनेंट हाँ ऑफ, सर. ये सारे प्रॉब्लम्स में ये यूज होने वाला है। फिर बोलना नहीं कि हमें नहीं आता है, कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो, ऑल्टरनेट हो, इनपिडेंट हो, कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो, सारा सब कुछ ये समझना है, ये मैथ्स पूरा आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिक्स के हिसाब से जाएगा, फिजिक्स एक फॉर्मूला तक आ गया, खत्म हो गया, इतना फिजिक्स खत्म हो गया, देन द रेस्ट यू शुड बी क्वाइट गुड इनफ इन योर मैथ्स पार्ट ऑफ इट टू गेट योर प्रॉब्लम्स करेक्ट। इसलिए मैं कंडीशंस दे रहा हूँ। अगर मैंने R1 by R2, R1 is greater than R2, तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा सर, R1 by R2 will be greater than 1, यानी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टिंग। देयरफॉर कैन आई से मास ऑफ M2 is greater than M1। अगर मैंने R1 is less than R2 लिया, therefore exactly R1 by R2 will be less than 1, therefore mass of M2 is less than M1 या M1 is greater। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ की तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स M2. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स M1। M1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर दो No, अभी। sir. No, One sir. minute. फाइन। Sir, sir, R1 upon R2 is greater than 1 का क्या मतलब होता है? मतलब R1 is greater than R2, उसका मतलब R1 is greater than R2। Okay, sir. Done, sir.
The point is, what you thought that I've kept it on to mute, that's why I'm not say over here. आप you clearly पता चलता है अगर R1 is greater than R2, so it's away from R1, closer to R2. And if I say closer to R2, उसका मतलब that mass is heavier. Yes, sir. Okay. यहाँ पे this is. That's why your dad tells you to wake up till midnight. हाँ, अभी पता चला. Smart dad, huh? Friends, erase करो. Yes, sir. So ये जो formula था वो किसके लिए था? This formula was for position of center of mass for a system of how many particles? 2 particles. Okay. It was for a system of center of mass for how many particles? 2 particles. यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो ना दो पार्टिकल्स के बीच में स्टूडेंट्स तो सिंपली तुम्हें यू कैन गो विद रिस्पेक्ट टू योर कंसेप्ट ऑफ टॉर्क का कंसेप्ट एंड यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली. Since there is one more method of getting for the system of 2 particles. You have one more way of approach. Once again, I'm speaking about students. ये second method we consider. Students, अगर suppose मैंने कोई mass दिया है students, I've given you mass m1, okay, and mass m2 I've given you, okay, and I've given you the distance between the two masses is given to you, okay. Let us say the distance between the two masses. I'll give you as a question only, students. Let me put forward in this manner. Okay, I've given you this is 1 kilogram. Let me say this is 1 kilogram. Okay, m1, and this is 2 kilogram. That is m2, and the distance between them is 3 centimeter. I want to locate the center of mass. So what exactly a formula for the students I can consider? तुम्हें पता है students, formula will be taking your R1 अगर तुम्हें चाहिए है ना, तो just now I gave you the formula. Distance from one of the masses we consider. तो m2 into d upon m1 plus m2 वो वाला formula तुम यूज कर सकते हो. अगर वो नहीं याद आता है तो पहले तुम m1 r1 is equal to m2 r2 फिर रेशियो लेके फिर r1 by r2 लेके तुम कर सकते हो. स्टूडेंट्स हाँ है ना, फॉर्मूला दिया है ना, Yes, sir. Yes, sir. निकाल सकते हो आंसर, निकाल सकते हो आंसर. चलो इसको सॉल्व करो एवरीवन फ्रॉम द फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन इट यू. एवरीवन चलो गेट मी द आंसर. Where do you find out the center of mass will be closer to 1 kilogram or closer to 2 kilogram? So closer to 2 kilogram. Okay, so now tell me what is the distance of the center of mass from one of the particles? Sir, 2. To what? Cockroaches, buffalo? 2 centimeter. So centimeter. Centimeter. From where? So from R1. R1 कहाँ पे? M1 या M2? Sir, M1. M1. Students, are all of you all agree with Neha? Students, do everyone agree with Neha what she said it? She's saying it that the center of mass is at a distance of 2 centimeter from M1. Sir, I guess it will be from M2. No, sir, Neha is correct according to me. See, Anaita is so smart. वो अपना फाइनल वर्डिक्ट बहुत कम बोलती है लेकिन वो सही बोलती है. See, Anaita, she doesn't speak much, but she knows the concept that center of mass always shifts towards the heavier mass. And since M2 is greater, so the point will be closer to M2 and far away from M1. Total is 3 centimeters, so it should be far away. Now let us consider, of course, the answer is fine, proper.
But now suppose if I give you some second method of getting it, students, ये थोड़ा सा easier भी हो सकता है, depends how do you go about. Any of the two cases you can consider, students. Second method में हम क्या कहते मालूम है, अगर ये system of two particles दिया था students, तो assume करो कि ये दो particles को हम लोग ने कहाँ पे लिया मालूम है, I've taken it along x-axis. तो मैं क्या करूँगा ना, I'll try to draw my coordinate axis, students. ऐसे ड्रॉ करूँगा ये x-axis और ये y-axis. और किसी एक मास को मैं ओरिजिन पे ले लेता हूँ. समझ में आ रहा है? जब भी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स बोला ना, तो या तो तुम दो मासेस को एक्स एक्सिस पे ले लो, वाई एक्सिस पे ले लो, या जेड एक्सिस पे ले लो. उसमें से एक मास को तुम ओरिजिन पे ले लो, और हो सके तो हैवियर मास ले लो, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. Are you getting it? Now if I want to locate the position, students, I want to locate position of center of mass. So I can simply go for my coordinate axis also. Now, if I happen to consider for mass 1 kilogram, students, can you tell me what exactly its coordinates I'll consider will be 0, 0, ना, क्योंकि वो origin पे है. 2 Yes, kilogram sir. के coordinates कितने हैं? 3, 0, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका x1 होगी और ये इसका y1 होगा for mass m1. ये Yes, coordinates होंगे x2, y2. Agreed? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये masses कहाँ पे distributed हुए? Where are the masses distributed? Are the masses distributed along x-axis or y-axis? X-axis. That means the distribution of the masses along x-axis. तो यहाँ पे students ध्यान में रखना, तुम्हें जो center of mass मिलेगा ना, position of or location of center of mass will be with respect to x-axis. तुम्हें y-axis के हिसाब से YCOM center of mass with respect to y-axis, तो तुम्हें सीधा 0 ही मिलेगा students, क्योंकि there is no mass distributed along y-axis. समझ में आ रहा है? देखो ना, दोनों के कोऑर्डिनेट को y1 का वैल्यू देखो 0 है, y2 का वैल्यू भी 0, तो YCOM तो मिलेगा नहीं, तुम्हें XCOM ही मिलेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो अगर तुम्हें लोकेट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो सकता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. Now see, get the answer. m1 is how much? So it's 1. How much is x1? 0. Plus how much is m2? 2. How much is x2? 3. Upon m1 plus m2, 2 plus 1, 3. Agreed? 3 2 is 6. 6 by 3 का आंसर कितना होगा? 6 by 3 का आंसर कितना होगा? So can I say my XCOM will be 2COM, यानी ये क्या होगा सर? इसके जो coordinates होगा ना स्टूडेंट्स, वो XCOM होगा comma YCOM. So can I say this will be 2, 0 होगा. So what is the distance of the center of mass from 1 kilogram? 2 centimeter. और यहाँ से कितना होगा? 1 centimeter. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. पहला वाला भी तुम यूज कर सकते हो, दूसरा भी यूज कर सकते हो. अभी देखो मुझे YCOM चाहिए, तो YCOM का फॉर्मूला क्या होगा सर? ऐसा करते हैं ना, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2. लेकिन सर यहाँ पे तो आंसर मुझे 0 मिलेगा. m1 कितना है? 1. y1 कितना है सर? y1 तो आपका 0 है, प्लस m2 कितना है? 2. y2 भी 0 है, अपॉन 1 प्लस 2 3. सर मेरा तो आंसर 0/3, मेरा आंसर 0 आएगा यहाँ पे. एंड स्टूडेंट्स, उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 2 सेंटीमीटर. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0. तो ये क्या करता है? लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी ये लोकेट करता है कोऑर्डिनेट. समझ में आ रहा है? यानी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोऑर्डिनेट्स XCOM एंड YCOM. अगर तुम्हें XCOM और YCOM मिलते तो इनडायरेक्टली कैन आई से इट्स लोकेटिंग व्हाट? It's locating the position vector from the origin. See, what is the position vector of the center of mass? ये है तुम्हारा center of mass. अगर यहाँ से मैंने origin से position लिया तो कैसे? This becomes my r bar position vector. तो देखो, यानी ये क्या होगा तुम्हारा RCOM? तो कैसे my RCOM is equal to XCOM, YCOM. Position. ध्यान से सुना, ये क्या है? Position vector. Position vector of center of mass for a system of two particles, that is RCOM, is equal to the coordinates with respect to x and y, and that is equal to how much? 3 centimeter, 2 centimeter, comma 0 centimeter.
क्या ये क्लियर हुआ? 2, 0. Is this Yes, sir. clear? Students, have you all understood this? Yes, sir. Yes, sir. All of you also, please put down this as a mathematical relation. Students, इसको तुम y axis पे भी ले सकते हो, z axis पे ले सकते हो, फॉर्मूला वही होगा. अगर मैंने y axis पे ले लिया स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा क्या होगा? सेम फॉर्मूला. वहां पे x axis 0 हो जाएगा, तुम्हारा y CM मिलेगा. Yes, sir. I get it. तो whenever you get a problem, students, तुम क्या करो मालूम है? लोकेट कर दो बॉडी को, लेकिन एक पार्टिकल को तुम ओरिजिन पे खींच ही लो, सीधा ओरिजिन पे ले लो उसको. हाँ, और वो भी ध्यान में रखना किसको ओरिजिन पे लेना है. हो सके उतना हैवियर मास हो जिसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लगते हैं. सपोज मैंने किसी के कोऑर्डिनेट्स रेशियो में दे दिए 3/2, 5/3, है ना, यानी दैट इज 1. लेकिन अगर उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए तो उसका तुम टेक इट एज 0,0, लेकिन हैवियर मास. एनी वन ऑफ द पार्टिकल यू कैन टेक इट एट द ओरिजिन स्टूडेंट्स, एंड टेकिंग योर ओरिजिन इनटू वन you can find out the center of mass of the entire system. Can I erase this, students? सर ये x कंपोनेंट हमारा R1 निकला ना, तो फिर R2 निकालने के लिए हम लोग को 2 kg वाला मास ओरिजिन पे ले सकते हैं. No need. You can see अगर ये R1 2 आया तो 3 - 2 will be 1 itself only. Yes, sir, but if we need to find it directly. Yeah. That you can consider. यानी तुम क्वेश्चन को रीड करो, उन्होंने सेंटर ऑफ मास कहाँ से पूछा है, दैट व्हाट यू कैन कंसीडर, उसको सब्जेक्ट बना दो. Yes, sir. Can I erase the students? Yes, sir. Okay. अभी देखना, अभी ध्यान से सुनना. ये है सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, लेकिन अगर मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, और फिर मैंने पूछा फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, find out the position of the center of mass for n number of particles in a given space. हाँ बोलो, पार्टिकल साइमल्टेनियसली कंसीडर करोगे? क्या करोगे? मतलब अगर 3 है तो मतलब लेफ्ट साइड से एक्सट्रीम कॉर्नर वाला और सेंटर वाला लेंगे, और फिर राइट साइड से भी वो लेंगे, फिर दोनों का मास कंपेयर करके निकालें. नहीं, मैंने बोला n number of particles. Students, n number of particles in a given space. Given space का मतलब क्या? 3D में दिया स्टूडेंट्स मैंने. अभी हम क्या करेंगे, हम वापस 2 के लिए जाते हैं. मैंने बोला n नंबर, लेकिन मैं n नहीं पकड़ रहा हूँ फॉर द टाइमिंग. हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ते हैं. मैंने 2 पार्टिकल्स दिए थे, दोनों को इधर x एक्सिस पे रखो, y एक्सिस पे रखो, z पे, यानी 1 डायमेंशन के हिसाब से लिया. आया ना? अभी देखो दूसरा केस, अगर मैंने बोला कि मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया, लेकिन उनको मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिया. सपोज अगर मैंने xy प्लेन में दिया है, yz प्लेन में दिया है, zx, यानी इन अ गिवन प्लेन, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स इन अ गिवन प्लेन, या सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स इन अ गिवन स्पेस, तो तुम क्या करोगे? अभी सोचो, मैंने ये 2 पार्टिकल्स दिए, ये m1 दिया है और ये m2 दिया है, ये तुम्हारा ओरिजिन है इन अ गिवन स्पेस. अभी ये गिवन प्लेन, गिवन प्लेन 2 डायमेंशनल. स्टूडेंट्स, ये 2 डायमेंशनल है. स्पेस का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल. तो यहाँ पे तुम्हारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस 0,0,0. अभी मैंने सपोज m1 यहाँ पे दिया है और मैंने m2 यहाँ पे दिया है इन अ गिवन प्लेन, इन अ गिवन स्पेस. तो तुम इनका सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले केस में तो हमने 2 पार्टिकल्स लिया अलोंग x, y, z, लेकिन अगर मैंने xy प्लेन में लिया, प्लेन कैन बी either it can be xy, it can be yz, or it can be zx, है ना? मैंने यहाँ पे xy ले लिया, तो इसका तुम कैसे करोगे? तो तुरंत तुम बोलोगे सर आपको m1 तो मिला है ना, m1 आपने xy प्लेन में लिया है, तो सर ऐसा करते ना, ये जो m1 है उसका पोजीशन r1 होगा, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. पढ़ाई कि नहीं वेक्टर्स में?
shows the instantaneous position of the particle. Haya na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. R1 will show the coordinates of M1. Yani where exactly M1 is placed in XY plane. So it's X1, Y1. Haya na? Yes, sir. Yes, Sir. sir. अभी Yes, फिर sir. M2 उसी प्लेन में, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना? तो ये M2 होगा। ये क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X2, Y2, है ना? Now students, अगर मैंने पूछा Yes, sir. what is the distance of M1 from origin? Hello, what is the distance of M1 from origin? क्या किया वेक्टर्स में? Under root X1 square plus Y1, R1 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर समझ में आ रहा है? अभी मत पूछना ये सब क्या बोल रहे हो. Dare if you raise such kind of stupid questions now. This is all you'll have done it in vectors, and one who's still not able to click it, please leave science. Go back to your class 9th and 10th, learn some better physics and then sit into the lectures. I'm telling you very, very clear, making it very clearly. That's why I told you very clearly, students, be consistent with your calculus and vectors. Students, vectors और calculus physics में इतना important है कि हर एक chapter तुम आगे करोगे वो आएगा आएगा और आएगा. उसको तुम छोड़ नहीं सकते. भले तुम 7वें chapter, 10वें chapter, 15th chapter you go in physics, still go back. Go through entire vectors. It starts, go on solving problems, go through all the formulas of calculus again and again and again. Every time when you sit for the physics lecture, you should have your calculus book and your vectors ka book in front of you. Who knows, any teacher can pick up any of the concepts from there. So you should not forget things. ये तुम्हारा position vector है. इसका distance निकाल सकते हो. देखो ना, लेकिन mass ये है और mass दूसरा M2 है. अगर मैंने पूछा, students, can you locate the center of mass for these two particles? तो तुम बोलोगे सर ये मास M1 है, ये मास M2 है, सर ये हेवियर है, ये लाइटर है, या ये हेवियर है, ये लाइटर है, कुछ भी हो सकता है. अभी हम अज्यूम ये करते हैं कि M1 हेवियर है. चलो M1 हेवियर है, तो M1 हेवियर है तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, है ना? क्लोजर टू दिस. Yes, sir. मुझे ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए ना, इसका वेयर एक्जैक्टली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज. तो बोले सर ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आपको लोकेट करना है, दैट कैन बी लोकेटेड बाय RCOM. Now can you locate the position of center of mass? Yes, why not? Your RCOM is nothing but M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2. आ गया फॉर्मूला. क्योंकि RCOM है क्या? So what is RCOM? Location of position of center of mass. यानी होगा क्या? XCOM, YCOM, है ना? yes sir. Yes, sir. जब भी तुम यहाँ पे R1 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो R1 देखो ना, ये आंसर यही आएगा स्टूडेंट्स. ये देखो ना, ये तुम्हारा RCOM है. तो मुझे बताओ R1 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? बताओगे R1 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? तुम लिखोगे ना X1, है ना? Yes or no? X1, Y1. Yes, sir. sir. Yes sir. Like that will go. यानी कि तुम RCM निकालोगे तो स्टूडेंट्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टू डिफरेंट आंसर्स. किसका आंसर निकाल रहे हो? सर हम ये निकालते हैं, RCM चाहिए ना, तो हम XCOM भी निकाल सकते हैं, YCOM. स्टूडेंट्स either you can find out separately or you can find out together. तो यहाँ पे क्या होगा? XCOM क्या होगा? सर सिंपल, M1 X1 plus M2 X2 upon M1 plus M2. YCM क्या होगा? M1 Y1 plus M2 Y2 upon M1 plus M2. क्या ये क्लियर हुआ? XCM और YCM स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये क्या किया है मैंने? दो पार्टिकल्स को लिया है कहाँ पे? इन एन XY प्लेन. अभी यही दो पार्टिकल्स को देखो, यही दो पार्टिकल्स को मैंने कहाँ पे लिया है? XYZ में लिया है. तो देखो ना, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर R1 आएगा और यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर R2 होगा. R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X1, Y1, Z1. R2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X2, Y2, Z2, है ना?
तो कैन आई फाइंड RCOM? ये फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला, बिकॉज M1 R1 M2 R2 ये फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा सेम। लेकिन तुम्हारा R1 क्या होगा? XI YJ ZK, यानी यहाँ पे तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? 3। स्टूडेंट्स यू विल गेट XCOM का फॉर्मूला, YCOM as well as ZCOM. Do you know the formula for XCOM? तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, M1 X1 plus M2 X2 the whole upon M1 plus M2. Clear? YCOM क्या Yes, मिलेगा? sir. M1 Y1 1y1 plus m2 y2. Y2 upon M1 plus M2. ZCOM क्या मिलेगा? M1 Z1 plus M2 Z2 upon M1 plus M2. Agreed? यानी Yes, sir. Yes, sir. ये जो मास्टर्स Yes, को sir. जब तुम ज्वाइन करोगे ना, ये जो मास्टर्स को अगर तुम इमेजिनरी लाइन से दिखाओगे ना, तो मे बी योर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सपोज अगर ये मास हैवियर है, ये मास आई माइट गेट इट ओवर हियर, तो ये होगा तुम्हारा RCOM। एग्री? जो क्या दिखाएगा? XCOM, YCOM, ZCOM। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. लेकिन sir. दोनों केस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या दिखा रहे हैं? दोनों केस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? सर आप बता रहे हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेलो, मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा हूँ X एंड Y। यहाँ पे भी क्या किया है? कोऑर्डिनेट्स। अगर बाय चांस मैंने एग्जामिनेशन में पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, तो तुम क्या करोगे? सर आपको ये डिस्टेंस चाहिए। सर वो तो 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स में मालूम है, तो आर स्क्वायर क्या होगा? सर आर स्क्वायर विल बी अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आ गया ना? हाँ सर। फिर मेरे को डिस्टेंस Yes, पूछा, sir. फ्रेंड्स अगर मुझे डिस्टेंस पूछा तो व्हाट एग्जैक्टली RCOM का डिस्टेंस क्या होगा? विल बी अंडर रूट XUM द होल स्क्वायर प्लस YCUM द होल स्क्वायर। आया ना थियरम ऑफ पाइथागोरस? अगर मुझे यहाँ पे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, देखो ना ये क्या दिखा रहा है? कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है। मैंने पूछा ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो क्या करोगे? सर 3 डायमेंशनल के लिए RCOM की मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो सर ये तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड हो गई। सर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इन अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड बड़ा होगा वेक्टर्स में। अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट XCOM द होल स्क्वायर प्लस YCOM द होल स्क्वायर प्लस ZCOM द होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेकिन अभी भी ये क्या किया है मैंने? अभी भी मैंने क्या किया है? सर आपने अभी भी हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए बोला है फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, यानी आपने इसके पहले 2 पार्टिकल्स को अलोंग 1 डायमेंशंस में रखा था, फिर आप 2 पार्टिकल्स को 2 डायमेंशंस में रख रहे हो, अब ये 2 पार्टिकल्स को आपने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखा है। सारे केस में हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। 1 डायमेंशन में भी हमें x, y मिल रहा था, 2 डायमेंशन में भी मुझे x, y मिल रहा है, 3 डायमेंशन मुझे x, y, z मिल रहा है। क्या मैं तीनों केस में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? व्हाई नॉट? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारे केस में सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट होगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर मास। ये सारे कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं। लेकिन भाई ये तो सिर्फ 2 पार्टिकल्स हैं। सर अगर मुझे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए यहाँ पे, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, Mn पार्टिकल्स, तो मैं क्या करूंगा? सर वो तो मैं पगला जाऊंगा, अपने बाल खींचना शुरू कर दूंगा, सर पटकना शुरू कर दूंगा, है ना? आया नहीं ना? सर। नहीं ना? उसके लिए भी फॉर्मूला वही है, टेंशन क्यों लेते हो? अगर मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया, लेट मी गो फॉर 3 डायमेंशनल के अंदर ही, अगर मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए तो फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर मैंने n पार्टिकल्स लिए फॉर
n particles. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? तुम्हारा आरसीएम का फॉर्मूला क्या होगा? m1 r1 plus m2 r2, यानी तुम्हारा आरसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus blah 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 plus mn rn upon m1 plus m2 plus m3 plus goes on plus mn. यानी ये RCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट्स सिंपली algebraic sum of mi ri, I equal to 1 to I equal to n, the whole divided by algebraic sum of mi I equal to 1 to I equal to n, because all these particles are aligned in discrete manner. आ गया तुम्हारा वहां पे, यानी एग्जैक्टली तुम्हें एक्सियम पे कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? अगर मुझे एक्सियम का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे n नंबर 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m5 x5 plus blah 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 mn xn upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 plus blah 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 plus mn. वैसे ही YCM वैसे ZCM, खत्म हो गई बात, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे भी सेम थिंग for n number of particles होगा. तो क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. RCM इन वेक्टर फॉर्म अगर चाहिए, मैग्नेट में वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा सर? XCOM I cap, YCOM J cap, ZCOM K cap. स्टूडेंट्स एक तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा x बार y बार z बार, या मैं कैप में लिख सकता हूँ. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. All the students inside this particular group, there were Yes, around sir. 30 students, Yes, sir. Yes, They have sir. moved out. दो स्टूडेंट्स भाग गए यहाँ से, पता नहीं कौन है वो, कौन है? वृद्धि, is it clear with you? Taksh, is it clear? Yes, sir. Okay, Vruti clear. Veer, Yes, sir. Swam, what about you? Shubh, what about you? Yes, sir. Prashika, Pranay, Yes, Piyush, sir. Piyush. Yes, sir. It is clear. Okay, Oj, Izar, Aisha, Arshal, Yes, Anaya, sir. Neha. Sir, आप Yes, बोलो. sir. sir, can you read the formula once, that RCOM for n number of particles? RCOM for n number of particles can be written in terms of XCOM bar, YCOM bar, या ZCOM bar. Yeah, XCOM I cap, YCOM J cap, ZCOM K cap. I've written it in a unit vector. If I want to write down the formula for RCOM, it will be M1 R1, small r1, plus M2 R2, plus M3 R3, plus it goes on till Mn Rn. N number of particles upon M1 plus M2 plus M3, it goes on till Mn. So how do you write down, students? Once again I'm putting it. अगर मैंने n number of particles दिया तो मैंने कैसे लिखा मालूम है? Algebraic sum of mi आ रहा है, I equal to 1 and I equal to n, तो ये तुम्हारे लिमिट्स आ गए समेशन में, अपॉन algebraic sum of mi, I equal to 1 to I equal to n. ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा. अगर वो ही मैंने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता ना स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंटीग्रेशन में आ रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? No, sir. अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी पता चलेगा कौन कितने पानी में. फॉर्मूलास तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, समझ में आया, अभी पता चलेगा प्रॉब्लम्स कैसे. अनीता, डोंट लाफ. Okay, sir. सर आप रावण जैसा क्यों हंस रहे हो? हाँ, रावण जैसा हंस रहे हो, देखो तुम लोग क्या बोल रहे हो सर, टीचर को रावण जैसा. कभी कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसा हेमंत सर को बोले हो, कभी ज्ञानेश्वर सर को बोलो, सर सुनेगा. रावण कितना ज्ञानी No, था, sir. आप
nice of him. मेरे को कैसे बता दिया है रावण कितना ज्ञानी था. वो ज्ञानी था, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन उसको घमंड भी बहुत था. That's why it's his ego made him to crash. But take it from me, he was the only knowledgeable person among all the other gods. Yes, बहुत sir. ही knowledgeable. Okay. Yes, sir. हमारा हो गया. Friends, do you all have your offline lectures चालू है वहाँ पे कॉलेज में? Yes, sir. कौन से offline lectures हो रहे हैं अभी? सर पूरे वीक में खाली एक बार हुआ. हाँ सर. सर एडमिशन सर उसमें भी 2 ही लोग थे. लेकिन फिर भी अभी still things are not fine. It's not like that. Still things are not fine. It's uncertain. भले it's offline, it is there, but in schools also kids are not going in that case. एक टाइप का ऑनलाइन का भी पैटर्न ही क्रिएट हो गया. स्टूडेंट्स, it's a pattern which is going on like that. Well, see, nobody wants to get scared in that case. Scared in the sense, यानी अभी ये है थोड़ा सा mild ही है. For you all are getting affected. Izar says Mira Road is always full. Mira Road में full है क्या? Yes, sir. कल आए थे तो benches got full. अरे बाप रे, क्या बात है. That's fine. लेकिन फिर भी kids अगर आते हैं students, that is not, according to me, it's fine. If you'll come, that is well good. लेकिन vaccination लेके भी आते हैं, it's nothing to worry about it. लेकिन वापस होना अगर कुछ होता है तो maybe mild है. लेकिन unnecessary again you fall sick for no reason. It takes away your 1 or 2 days, and secondly monetary expenses. The two things gets along with it. Either you lose your day, हो जाओगे रिकवर, ऐसे नहीं कि रिकवर नहीं हो जाता, उसको 2-3 दिन में रिकवर हो सकते हो. ये तुम्हारी इम्यून पावर अभी भी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पीपल हु आर एजेड. लेकिन सेम टाइम तो 2-3 दिन तुम्हारा मूड स्टडीज के अंदर ज्यादा नहीं रहता है, फिर तो तुम वहां पे लूज करते हो ग्रिप. ऊपर से अगेन डॉक्टर्स का कुछ तो मेडिसिन लोगे, और एक सिंपल एक दिन का भी मेडिसिन कोई भी डॉक्टर उल्लू के पट्टे के पास हो जाएगा तो वो 200-250 तो खींच ही लेता है. तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. Monetarily also it becomes a problem. And if one person picks it up, it goes on for the entire family. Yes, sir. That is what it is. It's a concern. Nia sir for IITians have only 2 were there in the school. 5. Which at Kharghar? Yes sir. Okay. Fine. सर बोल रहे SRCH थे. अरे SRCH सर awesome है तुम्हारे, एकदम सही है, धमाल होता है, मजा आता है. It's good. You need to. Absolutely correct. They try to make money in that case, like, it's fine. Okay, now let's move further, students. Now we go for certain problems related to it. Okay. To go ahead with the problem, students, let me give you the first question, students. Okay. The question speaks about, since I'm giving you since there are 3 particles of mass lies in XY plate, students. Okay, there are 3 particles. Okay, 3 particles of same masses.
of same masses lie in xy plane. Lie in xy plane, students. Okay. Students, their positions are 1, 1, 2, 2, and 3, 3. These are the positions, students, of the three particles in an xy plane. Students, I want you to locate COM for system of three particles. Is the question clear? Locate the Yes, center sir. of the system of three particles. Get your answer fast. Three particles of same mass are placed in an xy plane. The positions of the three particles are 1, 1, 2, 2, 3, 3. Locate the center of mass for the system of three particles. Students, when I use the word system, that means I want to go for all the particles together. All the three particles together. Is anybody, somebody, at least one body, nobody yet? Shubh has answered. Swayam are the two bodies who have answered. क्या बात है, स्वयं सुनता है लेकिन आंसर सही निकालता है. Even Shubh also is getting the answers correct. Very good. लेकिन unmute करके बोल दो ना. You भी सोचेगी कि क्या बात है, स्वयं आंसर दे रहा है. Aisha is also giving the answer. Students, I've got 3 answers. And the answer is 2, 2. Anybody of you all can answer, either Taksha, Shubh, or Rishika. Rishika has also got the answer. Very good. Shubh, Swam, Taksh, Rishika. Any one of you all want to answer? How to go about? Sir, can I? Yeah, bolo. Sir, we would do m1 upon m1 x2 plus x2 x2 m1 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3. So for the x coordinate we would go for 1 upon 3 multiplied by x1 plus x2 plus x3. So it would be 2, and for y coordinate it would be 1 upon 3 y1 plus y2 plus y3, which is 2. एक सेकंड, तुमने क्या बोल दिया यार, इतना फटाफट बोल दिया, कुछ पता ही नहीं चला मुझे. Exactly, sir. Okay, fine, doesn't Sir, matter. formula use. Okay, fine. She used a formula only. Yes, sir. Suppose you try to go for your location. Students, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है. Try to locate. And masses are same, students. अगर तो masses are same है तो go for the center of mass with respect to x coordinate, students. Okay, YCOM you can consider. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon what exactly will be m1 plus m2 plus m3. फाइन, तुमने डायरेक्ट किया, डजंट मैटर, क्योंकि सबका मास सेम है. अगर सबका मास सेम है तो यहाँ पे 3m तो आएगा. उसने क्या किया, सबका मास सेम है तो यहाँ पे m उसने बाहर निकाल दिया, और फिर she said it x1 plus x2 plus x3 यानी 1 plus 2 plus 3 3 4 5 and 1 6 डाल दिया. यहाँ पे आ गया इसका आंसर 2. सिंस अगर सपोज देखो स्टूडेंट्स, मैंने वेक्टर नहीं डाला है,
मैंने XUM लिखा तो 2 आ गया। अगर मैं YCM लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा? M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 अपॉन क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M3। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं देखूँ ना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं XUM कॉमा YCUM, व्हाट इज माय आंसर? 2,2, these are the coordinates. लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, XUM कॉमा YCUM इन वेक्टर फॉर्म, तो स्टूडेंट्स कैन आई से इट इज 2i कॉमा 2j? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, तो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू गो फॉर इट? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना? 4 प्लस 4 8, 2 रूट 2 2.8 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही मिनट सर। ये भगवान, ये कौन है? कौन सी लड़की जो जोर से चिल्ला के डराती है? Yes, sir. एक सेकंड रुको, रिफिल कर रहा हूँ। Okay, students, you can put down the question, students. Find out the position of center of mass. You can write down the question, students. Find out the position of center of mass of 3 particles. Find out the position of center of mass of 3 particles. M1 is equal to 1 kilogram. Hope you're writing, students. I'm not writing on the board because I'm refilling it. Since M1 is equal to 1 kilogram, M2 is equal to 2 kilogram, M3 is equal to 3 kilogram. Sir. क्या हो Sir. गया? Find out the position of center of mass of 3 particles के बाद। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होती है ना, इसका पापा को और मामा को ही कंप्लेन करना चाहिए। बुलाओ मामा को। ओके, position of 3 particles. M1 is equal to 1 kilogram, students. M1 is equal to 1 kilogram. M2 is equal to 2 kilogram. M3 is equal to 3 kilogram. Clear हुआ students इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And their position vector. And their position vector are. And their position vector are. R1 equal to. Students, position vector are R1 equal to I plus 4j plus k in meter. I repeat, I plus 4j plus k in meter. R2 bar is equal to I plus j plus k in meter. And R3 bar is equal to 2i minus j minus 2k in meter. 2i minus j minus 2k in meter. So students, I've given you 3 particles. In short, I'm telling you mass of each particle is 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. अब ध्यान से सुनना, जो 1 किलोग्राम है उसके कोऑर्डिनेट्स R1 बार दिया मैंने और वो IJK में दिया है, तो R1 बार क्या होगा? I plus 4j plus k in meter, bracket close meter. For 2 kilograms के coordinates क्या है? Bracket में I plus j plus k in meter. And for 3 kilograms students, your R3 is 2i minus j minus 2k. 2i minus j minus 2k in meter. Students, I want you to locate the position. Students, locate the position of center of mass for system of all the particles
and find out its distance from the origin. समझ में आ रहा है? Students, question समझ में आया? Locate the position of center of mass for the system of these three particles, as well as locate the distance of the center of mass from origin. Students, hope the question is clear to all of you all. Clear hai? Yes, sir. Okay. Now, so let's see Sir, who's... can you repeat the last part? I want to find out the position of center of mass for system of particles. Position. And second question, distance of the center of mass from origin. Thank you, sir. Most welcome. क्या बात है? स्वयं has answered. टीयू स्वयं क्या आंसर दे रहा है? धन दे रहा है. टीयू Yes, sir. स्वयं कितना फटाफट आंसर दे रहा है. He's from Virar only ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. टीयू. सुहानी को, संजना को बोलना जरूर. अदिति को भी बोलना कि स्वयं is answering very well. सर आप ही बोलना. Okay. Right. ऑरेंज बैच स्टूडेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि पर्पल हाउस में भी इतना सही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स है. इजार है, तू है. तक्ष is in which branch? I don't know about it. Yeah, TP Bhatia. Neha is not over here. Yes, anybody else who's giving an answer for this? शुभ, तूने डिस्टेंस नहीं निकाला? Yes, students, anybody?
No, my dear. 11/2, of course, it's proper. फिर RCM का ऐसे कैसे निकाला तुमने? It's 3/2 also. Yeah. Yes, It's sir. 3/2, 1/2 and minus 1/2. Students, तुम्हें फाइनल आंसर ये होना चाहिए. RCM क्या आना चाहिए मालूम है? Your RCM should be 3/2I plus 1/2J minus 1/2K. How many of you are getting this answer, students, in meter? जिसको तुम लिख सकते Sir, हो I have taken that common outside half. 1/2 यानी 3I plus J minus K. How many of you have got this answer? Please raise your hands. यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3. How many of you have got this answer? I want to know that. Neha and Shubhas. What about the rest of them? Paran, Devansh, Akash, Akshat, Anaita. क्या करो तुम लोग? हाँ? So it's such a simple question I had asked you. 3 particles were given to you. Formula क्या? What exactly the formula of RCOM? Since it's M1 M1 R1 plus plus M2 R2 plus M3 R3 खत्म हो गया upon M1 plus M2 plus M3. तीनों का मास तो मालूम था. R1 का मैंने यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिया है ना. R1 की जगह पे क्या लिखोगे? I plus 4J plus K. और ये M1 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, M2 को तीनों से, फिर सबका आंसर निकालो तो मैं IJK में आंसर आएगा. खत्म हो गई बात. ये क्या रॉकेट साइंस था? और फिर मैंने क्या पूछा? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में क्या होगा? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड यानी 3/2 the whole square from the origin plus 1/2 the whole square plus minus 1/2 the whole square. इसका आंसर क्या मिलेगा? 9/4 1/4 1/4. तो कहने से √11/2 आएगा. नेहा, you got this answer, Neha? 11/√11/2. Yes, sir. Sir, I Yes, also got sir. Yeah. फ्रेंड्स, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. तो Yes, क्यों sir. नहीं मिल रहा है? I don't understand that. मेरी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, तभी जाके I was waiting, but still I could not get any answers from you all. Friends, is it clear to all of you all? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Saksh, what about you? Veer, what about you? Sir, I sent you the same answer. Okay, Iza has got it. Yeah, I got it. Shubh has also got it. Neha to already gave the answer. On the rest of them, Rishika, Risha, Pranay, Piyush, Pihu, Osh, Nikhil, Kushali. Iza to answer नहीं दिया. Aisha, what about you? Aisha, Aryan, Arif, Anaita, Akshat. Okay, fine. Friends, clear है सबको? Everyone is clear with this? Yes. Or any confusion yet? तो वापस बोलता हूँ. स्टूडेंट्स, मैंने 3 पोजीशन वेक्टर दिया था, R1 R2 R3. तो R1 का मैंने डाल दिया वैल्यू, ये है. R2 का वैल्यू डाल दो, R3 का वैल्यू. सबको M1 को मल्टीप्लाई करो, M2 से मल्टीप्लाई करो, पूरा तुम्हें यूनिट वेक्टर में आएगा. नीचे तीनों का मास ऐड करो. ये फॉर्म में तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. जैसे तुम हाफ को बाहर निकाल दो, इसी का मैग्नेट पूछा, डिस्टेंस पूछा, तो ये आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. next lecture will be continuing further, students. Okay, I want you to go through the formula, students. Okay, अच्छी तरह से शांति से formulas you can go through it, students. Okay, and kindly prepare. You have your exams on your major test, students. Yes, Yes, sir, this sir. Sunday.